Which statement about acid is correct? Acid are proton acceptor. Acid transfer electrons to bases in aqueous solution. Hydrochloric acid react with ammonium hydroxide to produce ammonia. Ethanoic acid partially ionizes aqueous solution. Yes, it is the which elements have both a high melting point and a variable oxidation states. High melting point PO and variable oxidation state PO. Okay. So it is transition. Lithium, sodium and potassium are elements in group 1 of the periodic. Chlorine, bromine and iodine are elements in group 7 of the periodic table. Should identify the least dense of these elements in each group. Least dense are known. lithium ग्रुप 1 में lithium होगा एंड ग्रुप 7 तो अगर आप दोनों की डेंसिटी भी देखें जब जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आपकी बुक में सो यू कैन अंडरस्टैंड 25 reaction of metal P iron is as shown. Reaction with water, hydrochloric acid, metal oxide and carbon. Metal P2R and S. So reaction with water. आपको दिया में है no reaction slow vigorous very slow hydrochloric acid no reaction vigorous reaction with metal oxide and carbon reduce no reaction reduce. What is the order of reactivity of the metals? इसमें order of reactivity आपके पास क्या है? Least reactive to most reactive. P water के साथ कोई reaction नहीं होगा, ठीक है? So it is the least reactive. ठीक है? There is no reaction with water. It is the least reactive. And S very slow. So after no reaction there is very slow. Then it is slow Q. Then it is reduced. ठीक है? So जो आपको बस बॉक्स ही आपका ऑप्शन की तरफ दिया जाता है, ठीक है? P S U एंड R. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है? बाकी सबके साथ विगरस ही होगा, ठीक है? मेटल्स भी जो है P जो है रिड्यूस हो रहा है, नो रिएक्शन ऑप्शन इज ऑफ A R. The number of proton and the number of neutron in the atom of element H, Y and Z are 6, 7, 8, 6, 6 and 10. Which statement about the element is correct? X and Y are isotope of this element? No. Z form a ion plus 2 plus charge? No. X and Z react together to form an ionic compound. X, Y and Z are non-metals. Yes, they are non-metals. अगर मुझे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर देखें तो they are non-metals. Which diagram represents the arrangement of atom in an alloy? Alloy आपको पता है 2 और more metals को जब हम मिक्स करते हैं तो एक alloy जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो उसके ये सॉलिड होता है और इसके कॉम्पैक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स. So these are, अगर आप ऑप्शन 5 पर दिया है
अगर आप इसको देखें तो इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन ही उन्होंने दिखाया, इट इज नॉट अ सॉलिड बी करेक्ट है, बट देयर इज ओनली वन, एक ही शो किया हुआ है। सी भी दे आर नॉट करेक्ट, डी इज कॉम्पैक्ट एंड दे आल्सो शो टू alloys. Okay. So it is option B. Three metal compounds J, K and L are heated using a Bunsen burner. The results are shown. J colorless gas produced which relights a glowing splint. Colorless gas produced which turns lime water milky, no reaction. Which ray identify J, K and L? Colorless gas produced which relight a glowing splint. Glowing splint किसका होता है? पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। Colorless gas produced which turns lime water milky. Lime water, as of the fact there is some carbonate, so it is, and colorless gas it is magnesium carbonate होगा, ठीक। क्योंकि पोटाशियम जो होता है वो थोड़ा सा लाइलेट कलर का होता है, ठीक है। कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है एंड इट टर्न्स लाइम वाटर व्हिच इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, नो रिएक्शन, तो वो पोटाशियम कार्बोनेट के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन सी। Processes involved in the extraction of zinc are listed. Heat zinc oxide with carbon, condense zinc vapor, vaporize the zinc, roast zinc ore in air. In which order are the processes carried out? ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आपको याद हो, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे आयरन और को एयर, ठीक है। फर्स्ट वन, देन उसको हम एयर में रोस्ट करेंगे तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, देन दिस वन, और उसके बाद सारी बातें हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन होगी, 3 एंड देन जिंक ऊपर जाएगा, सो आपके पास आ जाता है 4 1, देन आपके पास 3 एंड देन 2, 4 1 3 2। Question number 30. Which processes use sacrificial protection to prevent steel from rusting? Fertilizers are used to provide key of element needed for plant growth. Which two compounds would give a fertilizer containing all three of these elements? अच्छा, अब आपको पता है जो फर्टिलाइजर होते हैं बेसिकली उसमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Two compounds give a fertilizers containing all three of these elements, ठीक है। तो कौन से दो कंपाउंड हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम provide, so it is KN3 and NH4 plus PO4, potassium nitrate and ammonium phosphate, ठीक है। तो ये आपको पोटेशियम देगा, आपको नाइट्रोजन देगा, फॉस्फेट। Which processes produce carbon dioxide? Too easy. Respiration, photosynthesis, fermentation, combustion of hydrogen. हाँ जी,
रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, बाकी दोनों में नहीं होगी। Which reaction in the contact process require the use of catalyst? कैटलिस्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज अगेन डाइल्यूटेड ऑक्सीडेंट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम H2SO4 which is again react with water to form 2H2SO4। तो आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे what are the products when limestone is heated from calcium hydroxide and carbon dioxide, calcium hydroxide and carbon calcium oxide and carbon dioxide, yes, calcium oxide and carbon dioxide basically with calcium oxide, calcium hydroxide नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड उस वक्त बनेगा जब हम वाटर या स्टीम में ऐड करेंगे। सो इट इज calcium oxide and carbon dioxide. The structure of ester W is shown. Each row gives the names of ester W and the carboxylic acid and alcohol from which it is made. ठीक है, तो अब ये ester जो है it is made from carboxylic acid and alcohol। ठीक है, नेम इसका बताना है। इसमें आप कार्बन एटम कितने हैं, आपके पास कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 आपके पास है कार्बन एटम, तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास आ जाता है ये आएगा आपके पास दिस वन। दिस इज द इथानोइक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिड। अब इथानोइक एसिड में आपके पास 2 ऑप्शन है, A एंड C। इथानोइक एसिड, अब हमें अल्कोहल देखते हैं कि वो इसमें कौन सी फोर ईस्टर कॉम्बिनेशन अल्कोहल कौन सी यूज हुई है। ठीक है, तो अल्कोहल जिसमें हमारे पास यूज हुई है this one, CH3OH। तो आपके पास
So for ethanoic acid and methanol, it is मिथाइल इथोनिक ऑप्शन इज सी। अब ये किस तरह से बनेगा फॉर्मूला, इसका मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। आपने बनाना है इसके लिए आपके पास यूज हो रहा है इथानोइक एसिड एंड मेथनॉल, ठीक है। इथानोइक एसिड and then it is methanol. One bond इसी तरह से show कर देते हैं, ठीक है। This is four, ये आपके पास आ गई methanol। नाउ आपके पास अब क्या होगा, आपके पास यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये रहा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका। गॉट इट? ठीक है। तो उसके बाद आपके पास मिथाइल इथोनेट का ये पूरा होल फॉर्मूला आ जाएगा। मिथाइल इथीन react with substance X to form ethanol. What is X? इथीन ने किसके साथ रिएक्ट करना है to form ethanol? इथाइल एसिड, ग्लूकोज, हाइड्रोजन, ठीक है। C2 और वाटर, इसके पास C2 H5। Alkenes can be produced by cracking large hydrocarbon molecule to form smaller hydrocarbon molecule. Which equation represents possible reaction when tetrahedrocane C14H30 is cracked? ठीक है। तो आपने इसको क्रैक हो गई है ये C14H30, C2H6, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है। अब हम ये काउंट करेंगे 2 5 5 2 3 कार्बन 5 कार्बन प्लस 4 9 कार्बन 9 है 5 14 कार्बन एंड 10 18 एंड 12 30, इसमें फुल है आपका C14H30 पूरा काउंट। अगर आप 2 में देखें तो उसमें कार्बन हम कर लेते हैं 2 3 5 5 10 4 कार्बन कंप्लीट है 18 18 एंड 6 18 6 और 10 10 एंड 18 28। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है C2H6 4C3H6, इसका मतलब कि ये है C12 4 3 द 12 और 6 4 द 24, ठीक है। तो 24 हाइड्रोजन एंड कार्बन 12 इधर हो गए, तो
C 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 कार्बन तो कंप्लीट है. हाइड्रोजन 18 plus 6, इसमें 32 हाइड्रोजन बन रहे हैं. So which is not correct. Okay. So first 1, 2 and 3. Got it? Next. The structure of some hydrocarbon. आपको कुछ हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर मैंने बता दी. Which statement about the hydrocarbons are correct? 1 and 2 have a different general formula. ये है C3H8 C4H10. इन दोनों का जनरल फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा. दिस इज नॉट करेक्ट. 1 and 4 are in the different homologous series. नहीं, की homologous series different नहीं है. 1 and 4. These are in the same homologous series. 2 and 3 are structure isomer. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कार्बन और हाइड्रोजन तो इसमें कंप्लीट है, बट दीज आर नॉट स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो है वो इस तरह से ब्रांच के नहीं होती है. ठीक है. 3 and 4 have the same empirical formula. 4 H10 C4H10 is ethane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light. Which substance are produced in the reaction? अब ethane react करिए chlorine से in the presence of ultraviolet light. तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा? 1 तो नहीं होगा. इसको अटैच नहीं है. इन तीनों में अटैच है. मैं देख लेते हैं. C2Cl, C2Cl, so 2, 3 and 4. These are here. Which polymer structure has the same linkage as terylene? So if you remember the formula of terylene, C10 H8O4. So हम अब इसको देख लेते हैं.
तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इट इज द सेम लिंकेज एज टेरेनीन। तो मैं देखें तो इसका जो आपके पास आता है फॉर्मूला, इट इज सेम, यस, दिस वन। आज आपने क्या करना है, आपने जाकर टेरेनीन का फॉर्मूला देखना है और फिर इस लिंकेज को उसके साथ जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। ओके, चलिए।